हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसके लिए टॉपिक 15 कवर कर रहे हैं जो है माइक्रो कंट्रोल एंड पीएलसी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। ठीक है, वैसे देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए भी शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन माइक्रो कंट्रोल एंड पीएलसी के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है अ माइक्रो कंट्रोलर टिपिकली कंटेन, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सीपीयू ओनली, सेकंड सीपीयू एंड मेमोरी ओनली, थर्ड सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट इंटीग्रेटेड ऑन सिंगल चिप एंड फोर्थ मेमोरी ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर with integrated CPU, memory and peripherals. Next, second, the primary function of PLC is to, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, सेकंड ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूजिंग लॉजिकल कंट्रोल, थर्ड स्टोर लार्ज डेटा एंड फोर्थ डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑटोमेट इंडस्ट्रियल process using logic control because PLC execute program logic to control machine and process. नेक्स्ट थर्ड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर पीएलसी। तो देखो ऑप्शन है सी प्लस प्लस, लैडर लॉजिक, पाइथन, जावा। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक इज अ ग्राफिकल एंड रीअसेंबल रिले लॉजिक यूज्ड इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट फोर्थ द स्कैन साइकिल ऑफ पीएलसी इंक्लूड्स। तो देखो ऑप्शन है इनपुट स्कैन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट अपडेट, हाउसकीपिंग। सेकंड मेमोरी अलोकेशन ओनली, थर्ड सीपीयू रीसेट ओनली एंड फोर्थ आईओ आइसोलेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इनपुट स्कैन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट अपडेट एंड हाउसकीपिंग, बिकॉज पीएलसी continuously scan input, execute program and update output, then perform diagnostic. नेक्स्ट फिफ्थ विच इज ट्रू अबाउट माइक्रो कंट्रोलर इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो देखिए ऑप्शन है दे आर इनपुट ओनली, सेकंड आउटपुट ओनली, थर्ड कॉन्फ़िगरेबल एज इनपुट और आउटपुट एंड फोर्थ नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड कॉन्फ़िगरेबल एज इनपुट और आउटपुट, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट कैन बी प्रोग्राम और इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट सिक्स्थ विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस फॉर पीएलसी। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सेकंड टेम्परेचर सेंसर, थर्ड इंडिकेटर लाइट एंड फोर्थ लिमिट स्विच। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंडिकेटर लाइट, बिकॉज इंडिकेटर लाइट आर आउटपुट डिवाइस नॉट इनपुट। नेक्स्ट सेवन व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सीपीयू इन अ पीएलसी। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टू होल्ड द यूजर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट, second to power supply power, third to convert signal to voltage and fourth to convert connect to the internet। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट टू होल्ड द यूजर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट, बिकॉज सीपीयू रन प्रोग्राम लॉजिक टू कंट्रोल आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट। नेक्स्ट एट विच मेमोरी स्टोर द पीएलसी प्रोग्राम। तो देखो ऑप्शन है रैम, रोम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैच मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रोम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज पीएलसी प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी टू रिटेन ड्यूरिंग पावर डाउन। नेक्स्ट नाइन्थ अ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम मेमोरी इज यूजुअली। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, of unlimited size and used only to store variable। तो करेक्ट आंसर है सेकंड नॉन volatile, that is flash, because program memory must retain instruction when power is off। नेक्स्ट टेंथ which of the following is a modular type of PLC। देखो ऑप्शन है कॉम्पैक्ट पीएलसी, रैक माउंटेड पीएलसी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड बोथ ए एंड बी, मींस कॉम्पैक्ट पीएलसी एंड रैक माउंटेड पीएलसी, बिकॉज वेरिएंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट 11th which of these is a major advantage of PLC over traditional relay control। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाई पावर कंजप्शन, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ease of programming,
थर्ड हार्डवायर्ड कनेक्शन ओनली एंड फोर्थ मैनुअल स्विचिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एज ऑफ प्रोग्रामिंग बिकॉज पीएलसी सिंप्लीफाई चेंजेस by reprogramming instead of rewiring. Next, 12th, microcontroller are commonly used in, तो देखो ऑप्शन है होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव कंट्रोल, ऑल ऑफ द वो। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द वो बिकॉज माइक्रोकंट्रोलर आर एम्बेडेड वाइडली फ्रॉम कंज्यूमर टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। Next, 13, which PLC programming language use graphical rungs, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन टू वर्टिकल रेल्स। तो देखो ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सेकंड स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, थर्ड लैडर डायग्राम एंड फोर्थ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लैडर डायग्राम बिकॉज लैडर लॉजिक यूजुअली रिजेंबल रिले कंट्रोल सर्किट विथ रेल एंड रंग्स। नेक्स्ट 14, पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस में इंक्लूड। तो देखो ऑप्शन है RS485, इथरनेट, यूएसबी, ऑल ऑफ द वो। तो आंसर है ऑल ऑफ द वो बिकॉज पीएलसी सपोर्ट वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट 15, which part of a PLC converts signals from sensors into usable form। तो देखो ऑप्शन है पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इनपुट मॉड्यूल बिकॉज इनपुट मॉड्यूल कंडीशन एंड डिजिटाइज सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसिंग। वैसे देखिए जनरल नॉलेज के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच इज द फाइनल आउटपुट डिवाइस इन पीएलसी कंट्रोल। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेंसर, सेकंड एक्चुएटर लाइक मोटर एंड सोलेंट, थर्ड इनपुट स्विच एंड फोर्थ मेमोरी चिप। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एक्चुएटर लाइक मोटर एंड सोलेनॉइड बिकॉज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ऑपरेट मशीनरी एंड प्रोसेस। नेक्स्ट 17, हाउ आर माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यूजिंग मशीन लैंग्वेज ओनली, second high level language that is assembly or IDE based tool, third by switching hardware manually and fourth no programming needed। तो correct answer है second high level language because microcontroller are programmed via software to perform task। Next 18, which is used to provide power backup to a PLC during power failure। तो देखो ऑप्शन है बैटरी, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बैटरी, बैटरी प्रिजर्व मेमोरी एंड क्लॉक ड्यूरिंग आउटेज। नेक्स्ट 19, विच इज नॉट अ साइकिल इन अ पीएलसी स्कैन। तो देखो ऑप्शन है इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन, आउटपुट स्कैन, एरर रिसेट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ एरर रिसेट, एरर रिसेट इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्कैन फेज। नेक्स्ट 20, which component does not belongs to a microcontroller system। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट बफर ओनली, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड आउटपुट बफर ओनली बिकॉज बफर आर पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट बट नॉट अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। नेक्स्ट 21, पीएलसी प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग। तो देखो ऑप्शन है लैडर लॉजिक, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड ऑल ऑफ द बोथ। आंसर है ऑल ऑफ द बोथ बिकॉज मल्टीपल IEC C611313 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सपोर्टेड। नेक्स्ट 22, द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ पीएलसी डिपेंड्स ऑन। तो देखो ऑप्शन है स्कैन टाइम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पावर सप्लाई, इनपुट वोल्टेज ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्कैन टाइम बिकॉज शॉर्टर स्कैन टाइम मीन्स फास्टर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 23, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोकंट्रोलर एंड माइक्रोप्रोसेसर इज। तो देखो ऑप्शन है माइक्रोप्रोसेसर हैज इंटीग्रेटेड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, सेकंड माइक्रोकंट्रोलर इज अ सिंगल चिप इंक्लूडिंग सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, third microprocessor are used only in desktop PC and fourth both are exactly the same। तो correct answer है second microcontroller is a single chip including CPU memory and input output because are self-contained embedded processor। नेक्स्ट 24, what is the purpose of power supply in PLC। तो देखो ऑप्शन है deliver power to CPU and input output modulus, second execute power program logic,
थर्ड स्टोर यूजर डेटा एंड फोर्थ प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट डिलीवर पावर टू सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बिकॉज पावर सप्लाई कन्वर्ट एसी मेन्स टू यूजेबल डीसी वोल्टेज फॉर पीएलसी। Next, 25. The time taken by PLC to execute one complete cycle of scan is called. तो देखो ऑप्शन है scan time, execution time, cycle time and both ENC। तो आंसर है both ENC, scan time and cycle time are used interchangeably for duration of one scan। वैसे देखिए जनरल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस सभी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।